Guys, this is Simran and welcome back to my YouTube channel. So as you guys have seen in my thumbnail that today I'm going to do one traditional look, wo bhi without any foundation guys. So guys, this video might be so much interesting to all those people who love to do a very natural clean makeup look. If you want to do a very clean look, wo bhi without any foundation, so this video is for you. So keep watching this video till the end. Guys, firstly I will start from my skincare routine. So I will just spray some rose water on my face. So guys, I had never applied anything on my face before applying the rose water, so I will wait to absorb rose water into my skin. So as you can see guys, जो मैंने रोज वाटर स्प्रे किया था वो अभी मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है एंड नाउ आई विल अप्लाई सम मॉइस्चराइजर ऑन माय फेस. मॉइस्चराइज़र भी अब मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है एंड मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र. सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी मैं अप्लाई करूँगी ये सनस्क्रीन. सो गाइज, दिस इज़ माई बेसिक स्किन केयर रूटीन. मैं ये स्किन केयर रूटीन हर रोज़ फॉलो करती हूँ. गाइज, मैं पहले सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी. मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है सनस्क्रीन लगाना. सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन लगाया. उसके बाद माई फेस लुक्स अ बिट ग्लोई. सो मुझे यही फिनिश चाहिए मेरे फेस पर. सो इसलिए मैं कोई भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी. मैं सिर्फ यही 3 स्टेप पर अपना मेकअप जो है वो मैं करने वाली हूँ. इट इज़ ग्लोइंग. सो गाइज, मैं अभी थोड़ा बहुत वेट करूँगी क्योंकि ये सनस्क्रीन मेरे स्किन पर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा. फिर उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट करूँगी. ओके, सो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स माई सेकेंड स्टेप, दैट इज़ now I will just fill up my under eye area with the compact powder. I'm using this compact powder to fill only my under eye area. सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने अपने अंडर आई जो थे वो अभी कॉम्पैक्ट पाउडर से कवर कर लिया है एंड इट लुक्स क्वाइट गुड. गाइज, इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, सो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर. मुझे यहाँ पर है थोड़ा पिगमेंटेशन, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी कंसीलर ऑन माय फेस. आई जस्ट वांट सम ग्लोई फिनिश, सो मैं ऐसा ही रहने दूँगी. सो अभी मैं अप्लाई करूँगी काजल इनटू माय आईज. मेरे अंडर आई जो थे वो कवर कर लिए क्योंकि मैं अभी अप्लाई करूँगी काजल स्मज ना हो, इसलिए मैंने अपने अंडर आई पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया. मैं यूज़ कर रही हूँ ये एलिटिन का काजल. सो लेट्स सी.
want to focus more on my eyes, so that's why I'm applying the kajal outer side of my eyes. सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने काजल अपने आईज में अच्छे से लगा लिया है एंड इट लुक्स रियली गुड। बहुत बड़ी बड़ी आंखें लग रही है मेरी, बिकॉज गाइज इन दिस एंटायर लुक आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट माई आईज, सो इसीलिए मैंने डार्क लगाया काजल। एंड नाउ आई विल अप्लाई सम मस्कारा ऑन माई आई लैशेस। मैं ये मस्कारा अप्लाई करूँगी कलर वाटरप्रूफ मस्कारा, एंड ये सस्ता वाला मस्कारा है। सस्ते वाली चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा होता है गाइज, सो आई एम यूजिंग दिस मस्कारा। ओके, सो मैंने अभी अप्लाई कर लिया है मस्कारा ऑन माई आईज। सो अभी मैं करूँगी मेरे आईब्रोज को थोड़ा बहुत फिल विद द हेल्प ऑफ दिस किट। आई हैव दिस आई शेडो पैलेट जो कि मुझे दिया था मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट। सो उससे मैं अभी करूँगी मेरे जो आईब्रोज है वो मैं फिल करूँगी। बहुत नॉर्मल करूँगी क्योंकि ज़्यादा किया तो मैं भूत लगने लगूँगी, सो मैं बहुत नॉर्मल से अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। Guys, I have completed my eyebrows. Guys, अभी मैंने अपने eyebrows जो है वो fill कर लिए हैं, and now I will apply some lipstick on my lips. I'm using this pink shade. It's totally incomplete without bindi and earrings. So गाइज, ये था मेरा इजी एंड नो फाउंडेशन लुक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ दिस वीडियो इज गुड देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।